Result is again. इसको होमवर्क क्या दिया था? मतलब लिख के लाना था ना? सब लिख के लाना था ना? क्यों? Just can't get out of sight. तुम लेट क्यों आ रहे हो आजकल? लेट? Where do you stay? Yes, sir. नहीं, which sector you stay? Sector 18. कितना दूर है इधर से? 5 किलोमीटर. ये पेट्रोल पंप कौन सा है? पेट्रोल पंप से जब राइट जाएंगे और आगे जाएंगे. अच्छा, अभी दूसरा स्कैन देखते हैं. ठीक है. इधर है कृषि. चलो कितना तक किया उन्होंने? Let us discuss the problem. Okay. Which topic we are doing? Water. Now, today we are going for hard water and soft water. अगर मैं लिखता हूँ
Take the line.
क्वेश्चन लिखो, इतना लिखो, then we'll discuss it. किधर है कृषि? लिखो, एटलीस्ट इतना लिखो, then we'll discuss our one by one. होमवर्क क्या दिया था तुम्हारे को? हाँ, रीड करके आने का था ना? अच्छा, वो टेस्ट देना होता है। कृषि यादव के रहते हैं। सेकंड पीरियड से अच्छा क्यों? आ जाएगा। अभी तो फोन किया था उसको मिस हो जाता बार बार लेक्चर। चलो ठीक है, बिल्कुल नथिंग टू वरी, हम लोग देखते हैं।
Okay. Okay. Sodium permutate. Okay, now let's see this. Water exists in two forms, that is hard water and soft water. ठीक है, लिख लिया तुमने? चलो लिखो. Okay. Hard water is what basically contains calcium ions and magnesium ion salts. Okay. इसका मतलब क्या है? They contain calcium and magnesium is hard water. Okay. How do you come to know that they do not give rich lather in the soap solution? जैसा भी तुमने एक soap solution लिया, ठीक है? और उसमें calcium ions and magnesium ions है. या तुमने water लिया और उसमें soap डाल दिया और उसको shake किया, तो आपको lather नहीं. वो वीडियो दिखाया था ना last time. Whereas जब तुम एक
सॉफ्ट वाटर ले जिसमें कैल्शियम आयंस मैग्नीशियम आयंस नहीं रहते, तो जब तुम इसको सोप डालते हो और उसको शेक करते हो आपको रिच लादन मिलती है। ओके, दैट मींस उसमें कैल्शियम आयंस और मैग्नीशियम आयंस से रिएक्ट करता नहीं है सोप, यहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस से सोप रिएक्ट करता है। ओके, और कैल्शियम और सोप क्या है बेसिकली, सोप जब कैल्शियम आयंस या मैग्नीशियम आयंस से रिएक्ट करता है तो कैल्शियम सॉल्ट ऑफ दैट सोप देती है, तो इससे सोप ज्यादा लगता है। और यहाँ पे सोप, since calcium ions is not there is no we can say for example consumption of soap to a great extent. Why? Because वो react ही नहीं करते थे इसलिए रिच ला देते थे। ठीक है, then there are two kinds of hardness, permanent hardness and temporary hardness. ठीक है, permanent hardness क्या है, where the calcium ions and magnesium ions are in the form of what, calcium chloride and magnesium या calcium sulfate and magnesium sulfate। और टेम्पररी हार्डनेस में क्या होता है, बाइकार्बोनेट्स अलोंग विद व्हाट, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। अब ये हार्डनेस को रिमूव कैसे करें, टेम्पररी हार्डनेस को क्या कर सकते हैं, यू कैन रिमूव बाय बॉइलिंग, बाय एडिशन ऑफ लाइम, बाय एडिशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा इसको। अब देखो बॉइलिंग करने के टाइम क्या होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। बाय एडिशन ऑफ लाइम देखो, कैल्शियम बाइकार्बोनेट जब लाइम से रिएक्ट करता है तो आपको इंसॉल्युबल, तो जैसे ये वाटर हार्ड वाटर, तो इमीडिएटली कैल्शियम कार्बोनेट इधर नीचे जमा हो जाता है, तो क्या कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, तो ये पानी पी सकते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पे देखो सब कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट नीचे बैठ जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, और ऊपर से तुम ग्लास लेके पी सकते हो पानी, ये सॉफ्ट वाटर। ठीक है, परमानेंट हार्डनेस को हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। परमानेंट हार्डनेस में सल्फेट रहता है, क्लोराइड और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, तो सोडियम कार्बोनेट इसमें डालने का, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा और सोडियम सल्फेट, इसको भी सोडियम कार्बोनेट से रिमूव कर सकते हैं। दूसरा, अगर टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट दोनों है, यानी क्लोराइड्स भी है, सल्फेट भी है, बाइकार्बोनेट्स भी है, तो इसमें क्या करना है, एक लॉन्ग कॉलम लेने का, और लॉन्ग कॉलम में अपना एक कंपाउंड भरने का, सोडियम परम्यूटेट। ओके, ये एक रेजिन यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड परम्यूटेट, इसमें सोडियम आयन इन लोगों के साथ अटैच रहते हैं, ये देखो सोडियम आयन। अब जब तुम हार्ड वाटर डालते हो उसमें, ठीक है, तो जब हार्ड वाटर डालते हो तो ये कैल्शियम, यहाँ पे जो सोडियम आयन है ना, वो पानी के साथ नीचे आ जाता है, और उधर क्या रख देता है, अपना कैल्शियम आयन, और नीचे जो आता है पानी के साथ वो क्या है, सोडियम आयंस, और कैल्शियम आयंस और मैग्नीशियम आयंस ऊपर ही रह जाते हैं, तो कैल्शियम परम्यूटेट और मैग्नीशियम परम्यूटेट फॉर्म होता है, और नीचे सॉफ्ट वाटर, ऊपर हार्ड वाटर था, इधर पास किया, कैल्शियम इधर ही अटक जाते हैं, मैग्नीशियम इधर ही अटक जाते हैं, और सोडियम नीचे आता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस, सोडियम नीचे आना शुरू हो जाता है और कैल्शियम उधर ही अटक जाता है, मैग्नीशियम उधर ही अटक जाता है, इधर पूरा हार्ड वाटर में आयंस है और इधर सॉफ्ट वाटर। व्हाट इज सॉफ्ट वाटर, कंटेन्स सोडियम आयंस एंड पोटेशियम आयंस एंड नॉट कंटेनिंग कैल्शियम आयंस एंड मैग्नीशियम आयंस। हार्ड वाटर का एडवांटेज क्या है कि हार्ड वाटर में कैल्शियम आयंस मैग्नीशियम आयंस, तो वाटर थोड़ा टेस्टी है। दूसरा, हार्ड वाटर में क्या होता है, जब लेड पॉइजनिंग चेक करने के लिए काम होता है, वाटर में जो लेड आयंस रहते हैं तो कैल्शियम आयन उससे रिएक्ट कर लेते हैं, किससे, सल्फेट से, ठीक है, और उससे क्या होता है, लेड वहां डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, फॉर्म्स व्हाट, कैल्शियम सॉरी लेड क्लोराइड या लेड सल्फेट, ओके, या लेड बाइकार्बोनेट नॉर्मली, तो लेड ये जो आयंस है वो इनसॉल्युबल रहते हैं, तो उससे लेड पॉइजनिंग अपना बॉडी में नहीं होता। दूसरा, हार्ड वाटर में क्या होता है, बेसिकली ये जो एडवांटेज है, बस उसका डिसएडवांटेज क्या है, ये हार्ड वाटर क्या होता है, बेसिकली इफ इट कंटेन्स कैल्शियम आयंस एंड मैग्नीशियम आयंस, दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स, किडनी स्टोन, स्टमक स्टोन, ओके, ये सब स्टोन फॉर्मेशन, कैल्शियम ऑक्सैलेट फॉर्म होता है, ठीक है, जैसा सीड्स रहते हैं तो वैसे स्टोन फॉर्मेशन होता है। दूसरा, जैसा भी तुम बॉयलर्स में यूज करते हो कैल्शियम,
तो बॉयलर ये क्या है, फॉर एग्जांपल हॉट वाटर पास, यानी पानी पास होता है, उसको हीट से स्टीम, यानी हीट देते हैं और स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। तो कैल्शियम आयंस क्या होता है, कैल्शियम आयंस वो पानी में है ना एक प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेता होता है। ये सपोज ये पाइप का ऐसा पानी का फ्लो है, बट इससे इधर बिकॉज ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म कर लेता है कैल्शियम आयंस, मैग्नीशियम आयंस, ठीक है, बॉयलर ट्यूब्स, तो ये पाइप से पानी कम है, बिकॉज इधर फॉर एग्जांपल इनसॉल्युबल कैल्शियम कंपाउंड्स फॉर्म होता है, मैग्नीशियम कंपाउंड्स फॉर्म, तो इसकी वजह से जब ड्रेनेज पाइप कम हुए होता है तो ब्लॉक हो जाते हैं इधर, या बॉयलर्स क्या हो जाता है, फॉर एग्जांपल उसमें स्केल्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। व्हाट इज स्केल्स, जैसे दांत में प्लाक्स यूज हो, जैसे तुम ब्रश नहीं करोगे बहुत दिन तक, तो वहां पे अपना एक लेयर फॉर्म होता है ना टीथ में, इसका बैक्टीरिया का, या फॉर एग्जांपल जो भी आयन जो खाते हैं उधर, ओके, वो अपना बैक्टीरिया उससे रिएक्ट करके प्लेक्स फॉर्म करते हैं और वो क्या होता है गम को वीक कर देते हैं। वैसे यहाँ पे कैल्शियम आयन पाइप में है ना ऐसा जमा हो जाते हैं और वो अपना वो जो फॉर एग्जांपल पाइप को है ना एकदम क्या बोलते हैं कवर कर देते हैं, उसका जो लेयर फॉर्म करते हैं, और जब तुम हीट सप्लाई करते हो तो पाइप को ये वाटर को हीट नहीं मिलता है। वाटर को क्यों नहीं हीट मिलता है, बिकॉज ये जाने को ही नहीं देता है, जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है ना, इसकी वजह से स्टीम को ज्यादा हीट लग रहा है, यानी स्टीम बनाने के लिए ज्यादा हीट लग रहा है, और उसकी वजह से आपका पूरा ये पाइप सड़ जाता है, या फॉर एग्जांपल वहां पे स्टीम ठीक से फॉर्म नहीं होता बॉयलर्स में, तो ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है, ठीक है। दूसरा कैल्शियम आयंस और मैग्नीशियम आयंस, ओके, एक तो स्टोन फॉर्मेशन है प्लस कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयंस, इसमें और एक पॉइंट भी है यहाँ पे पेज नंबर इधर गया, हाँ ये देखो, हाँ, so cold water enters these tubes immediately, change into steam. As a result, the dissolved solid incapable of changing vapor gets deposited in the inner walls of the tube. Page number 43. The results in less water flow through the tubes at one time and less steam is produced. Less water flow, less steam produced. The boiler scales form inside the tube, being a bad conductor of heat. Allows only a part of the outside heat to go inside and convert water into steam. This results in a further loss of heat. Thus, heat. To minimize this loss, boiler scale is removed time to time by using boiler compounds, or water is first softened and then used. Both cost money. ये बड़ा एडवांटेज में क्या है, hard water checks the poisoning of water by lead pipes. Some lead salt dissolved in water to make it poisonous. ठीक है, or it forms lead sulfate in the form of layer inside the lead pipe and checks the lead poisoning. अब देखो अभी अगर सपोज तुमको क्लीन करना है अपना क्लोथ्स, तो उसके लिए क्लेंसिंग एक्शन ऑफ सोप से डिटर्जेंट, क्लेंसिंग एक्शन ऑफ सोप से डिटर्जेंट्स, ठीक है। अब क्या होता है, तुम सोप हार्ड वाटर में यूज नहीं कर सकते, बट डिटर्जेंट यूज कर सकते। डिटर्जेंट हार्ड वाटर में भी चल सकता है, सॉफ्ट वाटर में तो चलेगा नहीं। तो अभी क्या होता है, तुम एक फैब्रिक को क्लीन कर रहे हो या उसको वॉश करने के टाइम, फॉर एग्जांपल ये देखो यहाँ पे एक फैब्रिक है, इसमें एक लेट से जैसे फैब्रिक ऐसा, और यहाँ पे एक स्टेन है, ऑयल स्टेन। तो जब तुम डिटर्जेंट डालते हो या सोप डालते हो, सोप क्या है, इट इज मेड अप ऑफ हेड एंड अ टेल, जैसे वायरस जैसे ही। तो टेल लाइक्स ऑयल, हेड लाइक्स वाटर। तो जब ये सपोज ये स्टेन ऐसा है, और तुमको मैं स्टेन ऐसा बता देता हूँ, ये स्टेन है, तो जो टेल है ना वो पियर्स करता है ऑयल में या ग्रीस में, और हेड विल बी टुवर्ड्स वाटर, और फिर ये सब पियर्स करना शुरू करते हैं, और इन लोगों का चार्ज है ना सेम रहता है, माइनस 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 रहता है सपोज, सो दे रिपेल ईच अदर, एंड रिपेल करने के टाइम क्या होता है, ये जो यहाँ पे ये जो ऑयल है वो क्या होता है, लूजन हो जाता है और एक ग्लोब्यूल फॉर्म करना शुरू, और इसके नीचे फिर से और कुछ डिटर्जेंट आ जाते हैं और उसको सराउंड कर देते हैं,
फिर क्या करते हैं, इसको लूजन कर देते हैं फ्रॉम द फैब्रिक, और एक टाइम आता है कि ये पूरा सब सराउंड कर देते हैं उसको। और ये क्या बनता है, बेसन, सॉरी माइसेल, इसको माइसेल बोलते हैं। माइसेल इज क्लस्टर ऑफ डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑयल और इधर वाटर। अब देखो ये जो फैब्रिक पे जो डर्ट था वो तो निकल गया, लूजन हो गया। अब तुम जब उसको पानी रन करोगे तो वाटर के साथ ये हेड है ना, वाटर को ये करेगा, फॉलो करेगा, बट हेड के साथ तेल है, और तेल इसके अंदर है ऑयल, पूरा निकल जाएगा और तुम्हारा फैब्रिक क्लीन हो जाएगा। ये डिटर्जेंट एक्शन हम इधर देखते हैं एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म में, वो क्या करोगे, वीडियो दिखाते हैं, उससे तुम्हारे को इजी पड़े। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, स्क्रीन दिख रहा है, यहाँ देखो, यूट्यूब प्लेटफॉर्म, ये देखो, ये हाइड्रोकार्बन, ये सब डिटर्जेंट्स वर्ड्स व्हाट सेंस, ये लूजन, थोड़ा वॉशिंग मशीन, ठीक है। तो ये चलो स्टार्ट करो रीडिंग, कहाँ से रीड करना है? Soft water and dark. हाँ पढ़िए। Water is said to be soft if it readily forms lathers with soap. Such a water sample is called soft water and is suitable for use. Water is said to be hard when it does not readily form lathers. FORM, mistaken. Lather with soap. Cause of hardness. Water of some springs, wells and rivers
contain dissolved water mineral matter. Hard water contains bicarbonates, chlorides, or sulfates of calcium or magnesium. Mm. When water flows over beds of limestone and dolomite, CaCO3 and MgCO3, carbon dioxide slowly converts some of these into soluble calcium and magnesium bicarbonates, which get mixed with the water and make it hard. Mm. Stalagmites and Stalagmites and stalactites. ये आपने पढ़ा है ना? in some limestone caves, one sometimes sees conical pillar-like objects, some hanging from the roof of the cave and some rising from their floors. These are formed by water dropping from the cracks in the rocks, containing dissolved calcium hydrogen carbonate. Release of pressure results in the conversion of some hydrogen carbonate to calcium carbonate. CaHCO3 the whole 2 gives CaCO3 plus CO2 plus H2O. Mm. This calcium carbonate, little by little, is deposited both on the roof and the floor of the cave. The conical pillar which flows downward from the roof is called stalactites, Mm. and the one which flows upward from the floor. वो spelling wrong है. Stalactites है. I निकाल दो. Tites. Tites. इधर CITES लिखा है ना? ऊपर वाला spelling right है. ये नीचे वाला यहाँ का wrong. And stalagmites. Types of hardness, temporary and permanent hardness. Hardness of water is of two types: temporary hardness and permanent hardness. Water that contains only hydrogen carbonates of calcium and magnesium is called hard water. It is called temporary water because its hardness can be removed just by boiling. Temporary hard water. CaHCO3 on boiling gives CaCO3 plus H2O plus CO2. MgHCO3 on boiling gives MgCO3 plus H2O plus CO2. The calcium ions and magnesium ions are thus removed by the water by the formation of insoluble calcium carbonate, and hence the water becomes soft. Mm. Water containing sulfates and chlorides of magnesium and calcium is called permanent hard water. This hardness cannot be removed by boiling. Mm. Advantages of hard water. These presence of salts is hard in hard water makes it tasty. Hard water is therefore used in the preparation of beverages and wines. Mm. Calcium and magnesium salts present in small amounts in hard water are essential for the growth of our bones and teeth. Hard water checks the poisoning of water by lead pipes. Some lead salts dissolve in water to make it poisonous. Calcium sulfate present in hard water forms insoluble lead sulfate in the form of a layer inside the lead pipe, and this checks for lead poisoning. Disadvantages of hard water. Steam is usually made in boilers which are made up of a number of narrow copper tubes surrounded by fire. As the cold water enters these tubes, it immediately changes the steam while the dissolved solids, incapable of changing into vapor, get deposited on the inner walls of the tubes. Mm. The result is that less water flows through the tubes at one time and less steam is produced. The boiler scale formed inside the tube, being a bad conductor of heat, allows only part of the outside heat to go in and convert the water into steam. This results in further loss of heat. To minimize the loss, the boiler scale is removed from time to time by using a boiler compound or water is first softened and then used. Both cost money. Hard water is also used for washing purposes. For washing purposes, soap is invariably used. Soap is chemically a sodium salt of stearic acid, an organic acid formula C17H35COOH. ONL. अच्छा organic acid formula, right? And it has formula C17H35. उसको सोडियम स्टीयरेट बोलते हैं. लिखो उधर सोडियम स्टीयरेट. सोडियम स्टीयरेट. स्टीयरिक एसिड का स्टीयरेट. RATE. पढ़िए. If the water is hard, the calcium and magnesium ions of the water combine with the negative ions of the soap to form a slightly precipitate of insoluble calcium and magnesium.
usually given the name of soap curd or scum. NaSP plus CaHCO3 gives CaSP, Calcium stearate, calcium stearate plus 2 N2NaCO3. NaHCO. The formation of soap curd will go on as long as there are calcium and magnesium ions present. This difficulty has been solved to a great extent by using synthetic detergents. Sulfur, Ariel, is the dirt. Are used in place of soap in domestic and laundry work. Mm. These are made by sulfonating some higher Alkanes. What are alkanes? Organic compounds. with sulfuric acid and then converting them into their sodium salts by caustic soda. These salts are called the detergents. Detergents are more soluble in water than soap and are unaffected by hardness of water, as their calcium salts are Soluble in water. Cleansing action of soaps and detergents. When a soap or detergent is dissolved in water, molecules gather as crystals called micelles. The tails stick inwards and head outwards. In cleansing, the hydrocarbon tail attaches itself to oily dirt. When water is stirred, the oily dirt tends to lift off from the dirty surface and dissociates into fragments. This gives an opportunity to other tails to stick to oils, and the negatively charged heads present in water prevent the small globules from coming together and form aggregates. Thus, the oily dirt is removed from the object. Removal of hardness. Removal of temporary hardness by boiling. Bicarbonates on heating form insoluble carbonates and are precipitated, leaving the water soft. CaHCO3 2 on boiling gives CaCO3 plus H2O plus CO2. By addition of lime. A more practical method is to add a calculated quantity of slaked lime. The following reaction takes place in the formation of insoluble carbonates. CaHCO3 plus CaOH2 gives 2CaCO3 plus 2H2O. Mg the whole HCO3 plus CaOH2 gives MgCO3 plus CaCO3 plus 2H2 by the addition of washing soda. When washing soda or soda ash is added to hard water, the corresponding insoluble carbonates settle down and can be removed by filtration. CaHCO3 plus NaCO3 gives CaCO3 plus 2NaHCO3. Yes. MgHCO3 plus Na2CO3 gives MgCO3 plus 2NaCHCO3. Removal of permanent hardness. To remove permanent hardness. Underline that. Removal of permanent hardness. वो अभी highlight नहीं किया तुमको उसको ये करना पड़ेगा. Underline. To remove permanent hardness of water, it is treated with a calculated quantity of soda ash. When the following soda ash is Na2CO3. When the following reactions take place, CaSO4 plus Na2CO3 gives CaCO3 plus Na2SO4. Yes. CaCl2 plus Na2CO3 gives CaCO3 plus 2NaCl. If the Na2CO3, CaCl2 plus Na2CO3. If the hardness is both temporary and permanent, particularly when large amounts of water are concerned, the permutate process is used. Permutate. Permutate is an artificial zeolite. Chemically, it is hydrated sodium aluminium orthosilicate. Underline that. Hydrated sodium aluminium silicate. यानी सोडियम है, aluminium है और silicate, silicon है. Okay? उसको silicate बोलते हैं. जब ऑक्सीजन सिलिकॉन और मेटल आ जाएंगे ना तो silicate होते हैं. Having the formula Na2P. Yeah, P means permutate. A tall cylinder. A tall cylinder is loosely filled with lumps of permutate. When hard water containing calcium and magnesium ion percolates, passes through. Percolates का मतलब है passes through. Through these lumps, exchange of ion takes place. The sodium permutate slowly changes into calcium and magnesium permutate. वो देखो calcium CaP लिखा है, Mgp लिखा है. And with takes place, the sodium permutate slowly change into calcium and magnesium. And magnesium permutate. The
with the role of calcium ions and magnesium ions. When no longer active, the polymetallic is regenerated by running a concentrated solution of brine over and removing the Concentrated solution. of brine over and Brine means what? Sodium chloride. removing the calcium chloride formed by repeat washing. CaP plus 2 NaCl gives Na2P plus CaCl. हाँ yes. फिर से NaCl डाल देंगे वापस वो ये जो कैल्शियम परमेटेट बना है सोडियम परमेटेट में कन्वर्ट हो. Softening hard water using ion exchange resins. For scientific purposes, even the presence of positive sodium ion and negative bicarbonate and sulfate ions is not desired. To remove these ions, the water is passed through synthetic resins. The sodium ions are replaced by H plus ions and HCO3 minus and SO4 2 minus ions by OH minus. OH minus ions. And the water gets completely deionized. Completely deionized. Yes. यानी deionized means सिर्फ H2O रहेगा बस. 3x से लास्ट टाइम किया था ना? नहीं किया. हाँ? 3 states of matter तुमने पढ़ा था ना? 8 क्वेश्चन तुमको दिया था, 8 क्वेश्चन उसको दिया था, 16 क्वेश्चन था ना? अभी 3B एक्सरसाइज करते हैं. 3B, ठीक है? I'll give you some time, just go through, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं. एक बार ऐसा रन थ्रू कर लो, ठीक है? फिर हम लोग डिस्कस करते हैं. फिर तुम्हारा एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे. ये टॉपिक है तुम्हारे यूनिट टेस्ट में. एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग नहीं. एक बार 3B एक्सरसाइज देख लो, एक बार ऐसा रन थ्रू कर लो, एक एक क्वेश्चन ऐसा फास्ट रीडिंग करो. 3C एक्सरसाइज होमवर्क है, यानी होमवर्क में इसका आंसर नहीं है तो हम लोग इसका आंसर देखेंगे. पहले 2B 3B कर लो, then we'll discuss on.
शुरू करो, ये 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा क्वेश्चन है ना, तो 10-10 क्वेश्चन का हम लोग टारगेट रखते हैं। कितने क्वेश्चन है इधर? 22। हाँ, तो 11 क्वेश्चन दो टाइम में कर देंगे, ठीक है ना? चलो, जो गो थ्रू दैट within 10 minutes we'll start. ये ऐसे रहने देना, हुआ आएगा ना शरद, उसको बोलना रब मत करो, क्योंकि कृष्ण भी आएगा तो देख सकते हैं। जैसे 11 क्वेश्चन हो गए 10 में, चलो रीड करो। पहला क्वेश्चन Explain the terms. Solution, B solute, C solvent. solution is what? Solutions are homogeneous mixtures of two or more components, and their composition of these solutions keeps on changing as the relative amounts of these components keep on changing. Solution is equal to solute plus solvent. Yes. Solute. Solute is the substance that dissolves in the medium called the solvent. Solvent. The solvent allows more than one component solute to dissolve in it. Example: if sugar crystals are dissolved in water to form a sugar solution, then sugar is the solute, while water is the solvent, and the sugar water is called the solution. Explain why a hot saturated solution of potassium nitrate forms crystals as it cools. The solubility of KNO3, a solute, decreases with decrease in temperature or increases with increase in temperature. So when a saturated solution of KNO3 is cooled to the solubility of KNO3, the solubility of KNO3 decreases. Hence, it separates out from the solvent in the form of crystals. The remaining solution is at a lower temperature, but it is still saturated. Give three factors on which the solubility of a solid depends. The rate of solubility of a solid in a liquid depends upon the following factors. 1. Size of solid particles. The smaller the size of the particle, the larger the total surface area exposed to the solvent. Hence, its solubility is large. Stirring. While stirring, it brings a large amount of solute in contact. Solute in contact with the solvent. The solubility is faster. 3. Temperature. With rise in temperature, the solubility of a gas decreases, but the solubility of solid increases. If you are given some copper sulfate crystals, how would you proceed to prepare saturated solution at room temperature? Give practical details. How can you show that your solution is really saturated? Take 100 grams of distilled water in a beaker and add it to 1 gram of CuSO4. Stir it till it dissolves completely.
Now add another 100 grams of CuSO4 the same. नहीं 1 gram 100 ग्राम नहीं 1.00 ग्राम नहीं लिखो 1 ग्राम ही ऐड करोगे ना बार बार and stir it again till it dissolves completely. Continue the process until no more CuSO4 can dissolve in the solution of outstanding. Now the solution is a saturated solution at that particular time. Yes. Define one Henry's law. Henry's law. Second is crystallization. We stated different methods for crystallization. At any given temperature, the mass of gas dissolved by a fixed volume of liquid is directly proportional to the pressure of the surface of liquid. This law is known as the Henry law. It is a process by which the crystals of a substance are obtained from a hot saturated solution on cooling. The crystals are prepared in the laboratory by the following methods: by cooling a hot saturated solution, by evaporating slowly a saturated solution, by cooling a fused mass, by sublimation. What would you observe when crystals of copper 2 sulfate and iron 2 sulfate are separately heated in two test tubes? When you heat CuSO4 .5H2O and FeSO4.7H2O separately in two test tubes, you will notice that the water of crystallization condenses on cooler parts of the test tube and colorless anhydrous powder present in the test tubes. Table salt becomes sticky on exposure during the rainy season. Explain. On exposure to air, table salt sodium chloride turns moist and ultimately forms a solution, especially during the rainy season. This is because the commercial value of sodium chloride contains impurities like magnesium chloride, which are deliquescent. Pure sodium chloride is not deliquescent. What is the effect of temperature on the solubility of KNO3 in CaSO4? In the case of KNO3, its solubility increases considerably with the increase in temperature, while in the case of CaSO4, there is a decrease in solubility with further rise in temperature after it has attained a certain temperature. The solubility of NaCl at 40 degrees Celsius is 36.5 grams. What is meant by this statement? This statement means that at 40 grams Celsius, 36.5 grams. 36.5 grams of NaCl are required to saturate 100 grams of water. Then what test will you carry out to find out whether a given solution is saturated or unsaturated or supersaturated? Saturated solution. If we try to dissolve any more solute in a saturated solution at a given temperature, it will not dissolve, indicating to us that it is a saturated solution. Unsaturated solution. If we try to dissolve any more, more solute in a given solution at a given temperature, it will dissolve the solute, showing us that the solution is unsaturated. If we try to dissolve any solute in a given saturated solution whose temperature has been raised and it does not dissolve, then this solution is a supersaturated solution. What are solubility curves? Give their uses. It is a line graph obtained on plotting the changes in the solubility of a solute in a solvent against changes in temperature. When solubility is plotted against the y-axis and temperature along the x-axis, we get the variation in the solubility of any given substance with temperature, which is shown by the means of curves called solubility curves. The change of the curve shows how the solubility of a solute in the solvent varies from changes in temperature. From the curve, we can determine the solubility of a substance. Solubilities of different substances in a solvent at different temperature can be compared at a graph by looking at their solubility curves plotted along the same graph. The effect of cooling hot solution to different substances can be found out from the curves. हो गया 12 से लेके 12 से लेके 22 चलो सीज़फायर हो गया लगता है सीज़फायर इंडिया पाकिस्तान का वॉर सीज़फायर खत्म इंडिया अमेरिका ने इंटरवीन किया ना एक न्यूज़ चैनल देख लीजिए because ये important news
चलो शायद सीज में हो जाएगा अभी और खत्म हो जाएगा और का कोई सॉल्यूशन नहीं है चलो हो गया 22 क्वेश्चंस करना है 10 मिनट आई एम गिविंग यू फिर हम लोग एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद to 3B and 3C exercise करनी फिर we'll start with atomic structure इसी है सब टॉपिक क्यों लेकिन तुम लोग को पढ़ना पड़ेगा मेरे फ्रेंड तुम लोग नहीं पढ़ोगे तो पढ़ना क्यों टेस्ट में कितना मार्क्स मिला आपको फर्स्ट यूटी टेस्ट नहीं हुआ ceasefire हो गया इंडिया policy चलो now good news 12th 12 क्वेश्चन हुआ तुम्हारा 5 मिनट और दे रहे 12 13 14 22 तक करना है अपने को ब्रेक के बाद ही डिस्कस करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस है इसमें इनको इजी पड़े एक बार रेफर कर लो पूरा isn't it
कितना बज रहे हैं? टाइम इज क्या? व्हाट इज टाइम? 2 मिनट है तो ब्रेक ले लो और ब्रेक के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। क्यों? टाइम इसको इधर ही रहने दो। कम एंड देन जॉइन। ठीक है? टाइम इज अप। क्यों? चलो ब्रेक ले लो फिर अपना आगे डिस्कस।
मेरा फ्रेंड किधर गया आज?